औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिकल है उसमें जो है वो हम केमिकल इक्विलिब्रिया के क्वेश्चन जो है वो हम देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यूजिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हिच कंडीशंस अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. Okay, so the thing is that Kc, that we when we studied the theory of this chapter, we studied that Kc is affected only by temperature. ठीक है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो Kc भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा that will be adjusting the temperature. Reaction between sulfur dioxide and oxygen is a dynamic equilibrium. What happens when the pressure of the system is increased? When the pressure of the system is increased, the reaction moves to the where there are more number of moles present. So 3 and 2. Okay, the reaction moves where there are less number of moles present. Hence, in this case, right hand side. So reaction move to the right, right. So the answer is either B or D. A or C को जो है हम निकालते हैं. The rate of reaction will decrease, but the rate of reaction will increase. The rate of reaction will increase because more SO3 will be formed. The answer is D. Okay. Now this question, please do this one. Okay. So we write the equation N2 plus 3H2 2NH3, where in the initial change equilibrium moles and equilibrium concentration. Initial 2 moles, 6 moles, 0 moles. 2.4 mole of ammonia is allowed to reach equilibrium. 2.40. This means this is 2.40, 1.20. Sorry, this is not 2.40. Initial is 2.40 and 2.32 mole of nitrogen present equivalent 2.32. So this is 0.32, 0.64, sorry, 0.96, 0.64. This becomes 6.96 and this is 1.76. So the value of Kc will be 1.76 square over 2.32, 6.96 cube. The answer is A. ठीक हो गया. Which statement explains the observation that magnesium hydroxide dissolves in aqueous ammonium chloride but not in aqueous sodium chloride? So basically they say that MgOH2 plus NH4Cl MgCl plus NH3 plus H2O. ठीक है, so the answer is the NH4 positive ion, meaning this, it can donate a proton as it becomes NH3 of in the product form. ठीक है, okay. So this is the same question repeated again. The following equilibrium is an equilothermic reaction in the forward direction. What happens when the concentration of COR042 increases and the temperature decreases? When the concentration of this increases, reaction moves to the right hand side. Okay.
and the concentration of when the reaction moves to the right hand side, the products increase. Hence, the concentration of Cr2 increases. Yes, the equilibrium constant increases because the temperature decreases. So, the value of Kc and Kp is also affected by the change in temperature. The activation energy decreases. No, because a catalyst was not added. तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा. So the answer is B. Which process involves the conversion of sulfur dioxide SO2 to sulfur trioxide SO3? The combustion the combustion of sulfur contaminated fossil fuels? No. The contact process and the catalytic oxide. So this is C. Okay. The Bronsted-Lowry theory describes acid and base character, which, when concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid, make the following reactions. Which species are bases in these reactions? So basically, a base is a proton acceptor. ठीक है, तो HSO4 negative, is this accepting a proton? Yes, this is accepting a proton because it has a negative charge on both of them. HNO3, this, it is also accepting a proton. H2NO3, NO2 positive, H NO2 positive, this thing. No, this is not accepting a proton. So the answer is B. The formation of hydrogen and ethane reducible from methane reaches dynamic equilibrium. What are the limits of Kc? So Kc will be mole dm minus 3 bracket 1 4 minus 2 mole minus 2 dm mole 2 dm B. Okay. दिस इज द सेम क्वेश्चन द 15 जो कि अभी हमने जो है वो इधर किया है 13 में किया. तो ये भी आप खुद करिएगा एंड ये भी क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करना है क्वेश्चन नंबर 16. What are necessary properties of a dynamic equilibrium? The equal amounts of reactants and products are present. Concentration of reactants and products remains constant. Yes, the rate of yes, so this is not the answer. C is the answer. So what happens when the temperature is increased? The equilibrium constant increases. Yes. The partial pressure of NO2 increases because Kc की और Kp की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी. The activation energy is unchanged. Yes, temperature से activation energy के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So answer is A. Okay, do this question. 1 mole of phosphorus chloride PCl5 is heated to 600 Kelvin. Equilibrium is established and measurements are taken. The experiment is repeated with 1 mole of phosphorus 5 chloride heated to 600 in a sealed volume 2 dm3. सिर्फ जो है वो वॉल्यूम चेंज हुआ है और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई. ठीक है. ओके, अब जो है वो हम देखने वाले हैं कि okay, how will the measurements vary? The equilibrium concentration of PCl3 and Cl2 are higher in the second. The equilibrium concentration of PCl5 gas is lower in the second. All three gases are the same in both experiments. C, because the equilibrium concentration can only be changed when temperature is changed. ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो तो चेंज ही नहीं हुआ. तो अगर आप में से कोई सी कह रहे हैं तो वो गलत है. बी है. ठीक, इज लोअर. PCl5 गैस इज लोअर बिकॉज वॉल्यूम कम था, इसमें जो है वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दिया है. ठीक है. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें सिंपल केसी निकालना है. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, आप ही कर सकते हैं. विच कंडीशंस, छोड़ो इसको भी छोड़ दो.
हाइड्रोजन कैन बी obtained by reacting methane with steam. डेल्टा एच वैल्यू ये है इस इक्वेशन की. विच कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल गिव द ग्रेटेस्ट इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ हाइड्रोजन. तो प्रेशर लो कर दोगे, ठीक है, तो प्रेशर लो करोगे तो रिएक्शन इधर के बजाय इधर जाएगा जहाँ पे हायर नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो आपने बढ़ा देना है, ठीक है. ओके, डू दिस क्वेश्चन. केपी फाइंड करना है, तो केपी इज 20 स्क्वायर अपॉन 10 square 30. What is the answer? The answer is 1.33 into 10 raised to power minus 1. ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल सिंपल था. Ammonia and chlorine react in the gas phase. Which statements are correct? And each nitrogen atom is oxidized. 8NH3N2 हो जाएगा. No, this is not oxidized नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें जो है वो इसकी जो है, इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक -3 है और इसमें 0 हो गई है. N2 इट इज बेसिकली एलिमेंट. The oxidation is loss of electronic loss. Each chlorine atom is reduced 3Cl2 से Cl चला जाता है. Yes, ammonia behaves as a base acid accepting a proton. NH4 बन गया, तो ये भी correct है. Answer is C. बेस कैसे है, देखें ना, बेस इस तरह है कि U से कि देखें यहाँ पे 8NH3 था और अब NH4 हो गया, ठीक है. 6 और 8 को छोड़ दो, NH3 NH4 हो गया. +1 नहीं गेन नहीं होगी, एक हाइड्रोजन गेन हुआ है, तो इट एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन. एंड बेस क्या होता है जो कि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो आंसर इज सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. वी गॉट N2 plus 3H2 gives us 2NH3. Initial change equilibrium mole, equilibrium concentration. इक्विलिब्रियम मॉल एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. ओके, इनिशियल 0 है, इसकी भी इनिशियल 0 है. 7.2 mole of N2 and 12 mole of H2 were present in equilibrium mixture. इनकी इसके 7.2 है और इसके 12 है, तो इसके 7.2 हो जाएंगे, तो इसके जो है वो 12 हो जाएंगे, ठीक है. तो इसके 0 है, तो 7.2, तो 7.2. ये क्वेश्चन जो है वो, ये क्वेश्चन जो है ना वो आप एक तो खुद ट्राई करिएगा और मैं भी करूँगा. ये क्वेश्चन में कोई गलती है, ऐसे हो नहीं सकता ये. इतनी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, ठीक है. तो व्हाट इज दिस, ये भी आपने जो है वो खुद ट्राई करना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मुश्किल नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी डू इज 36. Initial amount of ammonium chloride 1 mole in the system had reached 0.3 mole of ammonium chloride. 0.7, 0.7, 0.7, 0.5. तो Kc is 0.7 upon 0.5 whole square because there are 2 over 0.3 upon 0.5. The answer is 3.267. 3.27. ओके, यूनिट से पूछे.
Sulfur dioxide is used as a preservative in winemaking. The following equations describe the reaction that occur when sulfur dioxide dissolves in water. Which statement about these two reactions is correct? SO2 SO3 में जा रहा है, SO3 negative SO3 2 negative में जा रहा है. So we can say that HSO3 negative acts as a base because it is gaining a proton plus H positive हो रहा है. So this is the correct answer. H2 has 2 mole of hydrogen, 3 mole of iodine, इसमें 0. Consider fixed volume of hydrogen, there are 2.4 mole of hydrogen, 2.4, 0.6, 0.6, 1.2, 1.2, 2.2 minus 0.6, 1.4. Okay, 1.2 square upon 2.4, 1.4. This is 0.4285. So the answer is 0.429. Which statement about reversible reactions are correct? An increase in concentration of reactant always gives increase in the concentration of product. This is correct. क्योंकि देखें ये इसी तरह ही है जैसे मैंने आपको कहा था कि एक इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स अस c प्लस d में a की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो c और d जो है वो भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है. लेकिन मैं अगर ए बी की कम कर दूँ तो रिएक्शन पीछे जाएगी, सॉरी सी की कम कर दूँ तो रिएक्शन जो है पीछे जाएगा और ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. An increase in temperature always increases the rate at which the equilibrium is established. Yes, an increase in temperature will also always increase the concentration of the product. No. So B is the answer. The table shows the partial pressures in equilibrium formed by the Haber process. This is the equation. What is the name? Kp. Kp in ammonia 4000 square, nitrogen 7000, 8000 cube, 4.46 into 10 raised power minus 9. So the answer is A. ये क्वेश्चन नंबर 48 करें. तो Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है वेरी सिंपल. Kc इज NH3 square N2 H2 cube. So C, no, not C because यहाँ पे पल्स है तो ये गलत है. It is B. Okay, similarly over here we have to write the expression for Kp, partial pressure of CH3OH H2 square multiplied by partial pressure of CO. So this is the equation, ठीक है. Hydrogen, carbon, air and reversible including the partial pressure of H2 and CO2 are both 10 kilopascal. Kp, what is the partial pressure of CO in the equilibrium mixture? तो ये जो है ये आप खुद कर लेंगे. आई एम श्योर आप ये खुद कर सकते हैं. बहुत सॉल्व ट्राई कीजिएगा फिर. Okay. Reaction involved in the contact process is shown. The reaction is investigated at 200 kilopascal and 700 Kelvin, and the value of equilibrium constant Kp is found to be Y. The reaction is then investigated at 1000 kilopascal and the value of Kp is found to be Z. Which statement comparing Y and Z is correct? Y and Z को क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताएं. इससे प्रेशर जो है वो 200 पास्कल किलो पैस्कल से 1000 किलो पैस्कल जो है वो उसने प्रेशर कर दिए. क्या फ़र्क पड़ेगा केपी की वैल्यूज़ में, कितना फ़र्क आएगा अब? हाँ जी, कोई फ़र्क नहीं आएगा. वाई एंड जी आर द सेम. वाई बिकॉज
यहाँ पे आपके पास 700 केल्विन है और यहाँ पर भी 700 केल्विन है, एंड के सी and Kp values only change when temperature is changed। एंड इसका जो रीजनिंग थी वो मैंने जो है वो करवाई हुई थी आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 56, nitrogen oxide NO2 is a brown gas. Di-NO2 an equilibrium between NO2 and NO2 brown colorless. Which row describes the effect of changing conditions on the color of increasing the pressure to 1? Increasing the pressure moves the reaction where less number of moles are present, hence N2O4 की तरफ। तो इसका कलर कलरलेस है, तो कलर बिकम्स लाइटर क्योंकि वो कलरलेस होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो -57 है, रिएक्शन जो है वो पीछे जाएगा, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ जाएगा। व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, तो उल्टा जो है वो एंडो हो जाएगा, तो कलर बिकम्स डार्कर क्योंकि मोर NO2 इज फॉर्म्ड। ठीक हो गया। अब मैं देखता हूँ कि आपको और कौन सा क्वेश्चन करवाएं, काफ़ी तो करवा दिए जो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन थे। जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। तो 0.6 स्क्वायर, 0.2, 0.3 क्यूब। So what the value of Kc is 66.7, 66.7 डी है आंसर। ठीक है, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। तो इसको जो है वो प्लीज़ आप, मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ, ट्राई करो ना, तो फिर बताओ कि आंसर क्या आता है। ट्राई करें प्लीज़। अच्छा, अब देखें कि सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर आयोडाइड फॉर्म रेडियोनेट के AgCl is ionized and Ag positive and Cl negative are found and the value of Kc is K1, Agi, Ag positive और Kc2। Each equilibrium position lies well to the left। ठीक है, equilibrium is to the left। Silver iodide will not dissolve in aqueous ammonia, silver chloride will dissolve in aqueous ammonia। Another equilibrium is formed, this and Kc, the position of the equilibrium lies to the right। What is the order of magnitude for these three equilibrium constants? अच्छा, अब देखें ये जो है ना के सी और के सी K1 और K2, ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो के सी की वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे जो है वो हम ये कहेंगे कि जो K3 है वो सबसे कम है, तो ए और बी तो निकाल दो। ठीक है, ठीक है, अब बात यह है कि K1 ज़्यादा है या K2 ज़्यादा है। अब आपने जो है वो इस बात को देखना है, तो इसको जो है वो अब हम इस तरह देखते हैं। अच्छा, K3 सबसे कम क्यों है, क्योंकि वो लेफ्ट पे है, तो
प्रोडक्ट्स इधर जो है ना वो कम है, तो केसी की वैल्यू भी कम हो जानी है। ठीक है, और इसमें जो है वो फिर क्या हो जाएगा कि के सी के वन और के वन टू में के वन सबसे कम है और के टू जो है वो उससे कम है, तो आंसर आपके पास सी हो जाएगा। ठीक है, के वन सबसे कम क्यों है? के वन सबसे कम इसलिए है कि जो सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, जो सिल्वर आयोडाइड है वो तो एक्वस अमोनिया में डिजोल्व ही नहीं होता। ठीक है, तो वो जो है वो सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व कर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर चला जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो कम बनेंगे और के वन जो है वो फिर उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन के टू में ये है कि सिल्वर आयोडाइड तो डिजोल्व भी नहीं होता। ठीक है, तो वो जो है वो रिएक्शन उसका लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और उसकी जो के सी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो वी से के थ्री सबसे ज़्यादा कम है, फिर के वन है और फिर के टू है। ठीक है, क्योंकि उसका के टू का प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो के सी की वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, moving on to the next question. Okay, do this question in the meanwhile. ये वाला क्वेश्चन करें। अच्छा, ओके, 2SO2 plus O2 gives us 2SO3, 0.2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 0.2 मोल। तो इनिशियल में 0.2 है और इसके भी 0.2 है, इसके 0 हो जाएंगे। प्लेसिंग 1 TMU, 0.1 मोल, 0.1, 0.1, 0.0, sorry, 0.5, and over here you've got, ठीक है, 0.1, तो ये भी 0.1 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, और ये जो है 0.167 हो जाएगा। तो के सी 0.1 ओवर 0.3 0.7। तो आंसर जब कैलकुलेट करें तो क्या आता है? 0. इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.05, 0.2 प्लस आंसर 0.5। हाँ, मैं बना रहा हूँ, बनाओ। टी बैग में नहीं बनाऊंगा, टी बैग में बड़ा है, नहीं बना, बड़ा है। कितनी की होगी? एक भी आदमी कोयटा चाय पे थोड़ी बैठे हैं। नहीं बस ठीक है, या ठीक है। अभी गए हो? हाँ, पास
आफ्टर हाँ हाँ सफेरी कहते हैं हाँ अच्छा 0.25 0.3 so 0.1 1.3 6.67 is the answer D ठीक हो गया अच्छा जी the question all pressures are measured okay kp t2 the partial value the numerical value of kp at t2 so kp is 5 square over x2 3 cube the answer is 25 over 54 25 over 54 this these are is the reaction endothermic or exothermic the reaction is exothermic because the temperature is changed. Okay, do this question. What is the concentration of silver ions? This thing at equilibrium when CO2 positive is 0.1 kc is this. So do this question फिर मैं बात करूँगा अभी आप ये करें फिर मैं आगे बताता हूँ
अच्छा, so KCCU2 positive over AG positive square 0.1 over x square 1 into 10 raised power 5 x square is equal to 0.1 over 1 into 10 raised power 5 1 into 10 raised power minus 6 तो x क्या हो जाएगी अंडर रूट ले लो इसका 1 into 10 raised power minus 3 अब you will be wondering कि मैंने जो है वो AG सॉलिड और CU सॉलिड को क्यों इक्वेशन में डाला क्योंकि KC जो है वो सिर्फ उन के लिए होता है जो एक्वा स्टेट में है सॉलिड्स के लिए लिक्विड्स के लिए नहीं होता केसी नहीं इस्तेमाल उसको एक्सप्रेशन में नहीं लिखते इसलिए नहीं लिखा तो अगर कोई ये सोच रहा है तो उसके लिए जो है वो बेहतर यही है कि वो जाके जो है वो इक्विलिब्रिया का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो दोबारा सुन ले उसमें मैंने ये बातें सारी बताई हुई है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं देखते हैं अगला कौन सा X and Y react together to form Z in a reversing reaction. The equilibrium unit of Z is lower at higher temperature or at lower pressure. ठीक है The equation क्या होनी equilibrium unit Z is lower at higher temperature. टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड वाला नेगेटिव होगा तो ए और सी होगा आंसर ठीक है और इक्विलिब्रियम ये लोअर प्रेशर तो 1 2 प्रेशर हाई लो कर दोगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो ए है क्योंकि सी में जो है वो 2 और 2 इक्वल है तो इसका हम कुछ बात नहीं कर सकते अभी जी when x and y are mixed together in a closed system of dynamic equilibrium the resulting graph could represent changes in the rates of forward reaction and reverse reaction over time बी और डी नहीं हो सकता ए होगा या सी होगा सी होगा क्योंकि जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा जब इसने खुद का डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो इसका मतलब है कि द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल तो इसमें जो है वो रेट इक्वल नहीं है बीच में फर्क है इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है और ये तो बिल्कुल भी नहीं है तो सी है ठीक है 79 जो है वो आपको आता है 80 देख लें pressure of the system is increased to 3 reaction moves to the left B or D cancel हो जाएगा C तो rate of reaction will increase ठीक हो गया तो ये जो था वो आपका था इसके लिए इक्विलिब्रिया के जो एमसीक्यूज थे वो यहाँ पे कंप्लीट हुए 80 में से मैंने कोई आराम से तकरीबन काफ़ी एमसीक्यू जो है वो करवा दिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसके थ्योरी पार्ट की तरफ जो है वो आ रहे होंगे अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब